सीधे ले चलते हैं भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गुड आफ्टरनून, आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। This press conference becomes a little more special as this is Shri Rajiv Kumar's first press conference after assuming charge as Chief Election Commissioner of India. हमारे समक्ष मंच पर आसीन हैं ऑनरेबल CEC श्री राजीव कुमार जी, इलेक्शन कमिश्नर श्री अनूप चंद पांडे जी, सेक्रेटरी जनरल श्री उमेश सिन्हा जी, द कंसर्न सीनियर DEC श्री धर्मेंद्र शर्मा जी, Senior DEC Shri Chandrabhushan Kumar and Shri Narendra Butolia, the concerned Senior Principal Secretary. I would now request Honorable CEC Shri Rajiv Kumar ji to make his opening statement. Thereafter, the floor would be open for your questions. Thank you. Sir, please. Thank you, Shefali ji. Honorable Election Commissioner Shri Anup Chand Pandey ji, colleagues on the dais, friends from media, present here and connected to us virtually, and fellow citizens. I feel highly privileged and honored to announce before you the schedule of election for the office of the President of India, not only the highest elected office of the country, but of the largest democracy of the world. भारत के राष्ट्रपति का पद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सर्वोच्च चयनित पद है और जिसके चुनाव कराने की जिम्मेदारी संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। मैं अपने सहयोगी निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद पांडे जी एवं संपूर्ण निर्वाचन आयोग के साथ भारत के 16वें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस करता हूं। It's a matter of great pride, privilege and honor that the institution of Election Commission of India has successfully, freely, fairly conducted elections 15 times to the office of the President. And this is the 16th time, and we really feel very privileged and honored. So the format of today's briefing would be something as it is on your screen. So what we'll do is we'll show you the overview, election procedure क्या है, election में कौन कौन भाग लेते हैं, वोट्स की उनके वैल्यू क्या है, नॉमिनेशन का प्रोसेस क्या होगा, इलेक्शंस की लोकेशंस कहाँ होंगी, वोटिंग कहाँ कहाँ होगी और कंडक्ट एंड रूल्स क्या हैं उससे रिलेटेड, और उसमें कुछ हम लोग नए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम करेंगे वो क्या है और लास्ट में शेड्यूल क्या है। The term of office of Shri Ramnath Kovind ji, Honorable President of India, is ending on 24th July 2022, as all of you know. As per Article 62 of the Constitution of India, an election to fill the vacancy caused by the expiration of the term of office of the outgoing President is required to be completed before the expiration of the term, which in this case is 24th July 2022. Article 324 of the Constitution, read with the Presidential and Vice Presidential Election Act, copies of which are here outside. You can also take copies. And the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974 vest the superintendence, direction and control of the conduct of election to the office of the President of India in the Election Commission of India. And Commission therefore, as I said, is fully geared up to discharge and perform this duty in a very, very free and fair way. जो एक्ट मैंने अभी आपको दिखाया उसकी धारा 4(3) में निर्वाचन के लिए जो अधिसूचना है वह निर्गामी राष्ट्रपति जी की पदावधि समाप्त होने से पूर्व 60वें दिन 60th डे या उसके पश्चात जारी की जा सकती है और एग्जैक्टली इट इज वी आर फॉलोइंग दिस, इट इज आफ्टर 60th डे. As per Article 54 of the Constitution of India again, the President is elected by the members of the electoral college consisting of elected members of both houses of parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha, and elected members of the legislative assemblies of all states, including National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Pondicherry. और यहाँ ये एक बात इम्पोर्टेंट है कि
जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं राज्यसभा में, लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, they are not part of the electoral college and therefore they are not entitled to vote. Similarly, members of the legislative councils are also not electors for the president election. Article 55(3) of the Constitution provides that elections shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote, and voting at such election shall be by the secret ballot. In this system, the elector has to mark preferences against the names of the candidates. तो वो किस तरह से मार्किंग कर सकते हैं? वो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में यानी 1, 2, 3 कर सकते हैं, रोमन रूप में कर सकते हैं, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेज की जो रोमन जो 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 उसके शब्द हैं उनमें अंक हैं उनमें कर सकते हैं, और ये शब्दों में अंकित नहीं किया जा सकता है. Preference has to be marked in figures only and shall not be indicated in words. The elector also has to mark many preferences against the number of candidates. While marking of the first preference is compulsory for the ballot paper to be valid, और अगर किसी वोटर ने प्रथम चॉइस नहीं दी और बाकी चॉइस दी तो उसका वोट कैंसिल हो जाएगा. एक दूसरी विशेष बात है कि वोट देने के लिए आयोग अपनी तरफ से पेन प्रोवाइड करेगा. यह पेन पहले से ही एआरओस के पास रहेंगे और डेजिग्नेटेड ऑफिसर द्वारा मतदान केंद्र में वोटर्स को मत पत्र सौंपते समय दिए जाएंगे. सो दे हैव टू वोट ओनली बाय दैट पर्टिकुलर पेन. इफ किसी अन्य पेन का उन्होंने उपयोग किया तो मतगणना के समय उनका वोट इनवैलिड करार दे दिया जाएगा. The Election Commission, in consultation with the central government, appoints the ROs, once from the Lok Sabha and second time from the Rajya Sabha. So this time, Secretary General Rajya Sabha will be appointed as the returning officer for the present election. The Commission has also decided to appoint assistant returning officers in all the state capitals, including NCT of Delhi and Union Territory of Puducherry, and this is for making all the arrangements for conducting the poll and for transporting ballot boxes from Delhi to the state capitals, where the voting will take place at the designated places, and also to bring back those ballot boxes. If in case the AROs are not, for some reason, fall ill or something, the Commission has also appointed the second assistant returning officers and will be distributing you a book in the form of a press note. What I am reading is available. This will be also uploaded. Appendix to this book gives you all the details of the ROs, AROs, their names, their phone numbers, everything. Now, coming to the place of voting, as per Rule 7 of the Presidential and Vice Presidential Election Rule 74, poll for the election will be taken in Parliament House and in the premises of the state legislative assemblies, including the legislative assemblies of NCT of Delhi and Puducherry, and the rule provides where legislative assembly meets for transaction of business. So this is what is provided in the rule itself, and the polling is required, if required, shall take place in these places, and the list of these polling stations is also given in the appendix 2 of the book I just showed you. Now I come to the value of the votes. Value of the votes of the elected members of the state legislative assemblies combined is 5,43,231. And similarly, of all the MPs combined, it is all these slides would also be given to you. I suppose they must be already tweeted and must be with you on your system. So the states is 5,43,231. MPs is 5,43,200. So almost equal. And total is 10,86,431. While the electoral college consists of MPs, who are 776, and MLAs of the entire country, who are 4,033, totaling to the voter list of 4809.
So that's what is the total number. Now I come to the nomination papers. The nomination paper of a candidate has to be delivered only at Delhi, an office designated by the RO. और nomination के, and it cannot be at any other place, it has to be only at Delhi. Nomination में proposer के रूप में कम से कम 50 proposers, 50 members of the electoral college will propose, and another set of 50 will second. They would be not common, new. So one set for proposing and one set for seconding. And an elector can subscribe to only one nomination paper of a candidate as either a proposer or a seconder. अभ्यर्थी स्वयं इसको फाइल कर सकते हैं नॉमिनेशन को, या अपने किसी प्रपोजर या सेकेंडर के द्वारा 11 o'clock से 3 o'clock तक एक्सेप्ट हॉलीडेज फाइल कर सकते हैं. एंड एज पर द प्रोसीजर देयर इज ए सिक्योरिटी ऑफ 15,000 rupees which has to be filled. There are designated treasuries. There is an RBI office. What is all provided in the booklet. This is for more for the candidates. This can be deposited. Now, coming to the electoral college again, as per Rule 40 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules, 1974, the Commission maintains a list of members of the electoral college, as referred to in Article 54, with their correct up-to-date addresses and for the purposes of presidential elections. A copy of the electoral college is also being uploaded on the Commission's website. So anybody can see who is the member state-wise. That is all on the Commission's website. We'll be posting it. And there are certain, in this list, we will require to update it because there are elections which are taking place for the Rajya Sabha to the 55 positions, result of whom is coming before the presidential elections date. It is similarly, the voter list would be updated as and when the term of these MPs happen, and they will be part of the voter list. Similarly, in legislative assemblies also, wherever there are by-elections, and if the results come before the date of voting, their names would also be added in the voter list as a supplementary list, and all of that will also be put on the website of the Commission. Further, this voter list is also available if anybody wants to keep it as a record for ₹300 at our counter, which is set up in our Commission, but it's available on our website as well. As regards the date of polling, candidate can authorize a representative to be present at the time of polling and at the place fixed for counting. Or this has to be informed to us in advance so that the representative can be approved. About the place of voting for the MPs and MLAs. Normally, MPs are expected to cast their votes at the place of polling in the Parliament House, New Delhi. And similarly, members of the state legislative assemblies are also expected to cast their vote in the respective assemblies. However, if there is an emergency or there is some requirement, prior approval से voting location, किसी भी voting location पर MPs and MLAs दूसरी अपने वोट को डाल सकते हैं, बट इसके लिए कम से कम 10 दिन पहले आयोग को सूचना देनी पड़ेगी ताकि उनके वोट की व्यवस्था उस चेंज स्थान पे की जा सके. As I mentioned earlier, the Constitution has expressly provided that election to the office of President shall be by secret ballot. The electors are therefore expected to scrupulously maintain secrecy of vote. In this election, there is no, what you call the display of the vote at all. It is to be secret. There is no concept of open voting in this election, and showing the ballot to anyone under any circumstances will render the vote invalid. So the process is that after you have taken the ballot paper, you mark it in the compartment, fold it,
and mark it with the pen, as I mentioned, which we have provided. Marking it by any other pen would also make it invalid. About the whips, it is also clarified that political parties cannot issue any whip to their MPs and MLAs in the matter of voting in the presidential election. There is no whip which is permissible in this election. As per Section 18 of the President and Vice President Election Act rules, the offence of bribery or undue influence in any manner, as defined in Section 171B and 171C of the IPC, by the written candidate or any person with the consent of the written candidate, are among the grounds on which the election can be held invalid by the Honorable Supreme Court in an election petition. So, there is no way that any influence or any inducement or any case of undue influence which must be totally avoided. Otherwise, it's a ground for petition. So, दोबारा से सारांश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने एमपीज और एमएलएस का कोई व्हिप इशू नहीं कर सकेंगे, और चूंकि ब्राइबरी और अनड्यू इन्फ्लुएंस क्राइम की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इन ग्राउंड्स पर इलेक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द भी किया जा सकता है. Our COs in the states will supervise the arrangements and the election, as I mentioned earlier. Now we come to the COVID. Fortunately, it's not as an issue as it was, but still the Commission has decided to maintain every protocol as applicable in the respective states. The entire, on the day of polling and on the day of counting, the entire protocol would be followed. It has also been Commission's endeavour to make elections eco-friendly. This is our responsibility. And in view of the importance of this election and the fact that lawmakers constitute the Electoral College, and to reinforce criticality of environmental protection measures in policy and action, the Commission has directed the returning officers and assistant returning officers concerned to ensure use of eco-friendly and biodegradable material and eliminate the use of prohibited plastic material altogether. चुनावों को इको-फ्रेंडली बनाने के लिए प्लास्टिक मटेरियल की बजाय टोटली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का इस्तेमाल करने का निर्देश कमीशन ने सभी को दिया है. Coming to the counting of votes will be held in New Delhi under the supervision of the returning officer, who happens to be the Secretary General of the Rajya Sabha. And on completion of the counting, the return of election in form number 7, as appended in the rules, will be signed and issued by the returning officer. So I have already stated that this press note booklet is available also, and this is copies are kept outside, but this is also available if anybody wants from our office as well. There are number of questions which are raised about this election. So we have also prepared a frequently asked questions FAQs. There are 35 questions which we are uploading immediately after this. So I'm sure that replies to whatever is in your mind would be available here. But anyway, if you want to ask anything, now in the end, in pursuance of the subsection 1 of section 4 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, the Election Commission of India has fixed the schedule for the election to fill the office of the President of India as given in Appendix 3, and which I am reading out to you now. Can we put it on the... I was waiting for you to announce it, sir. So the notification would be on 15th June, that is Wednesday. Last date for making the nomination would be 29th June, that is Wednesday. Date for scrutiny of nominations would be 30th June, that is Thursday.
Last date for withdrawal of candidature would be Saturday, that is 2nd of July 2022, and date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022. That happens to be Monday. Thereafter, we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared, that would be 21/7/2022. Well in advance, then the 24th of July, the last date of the Honorable President being in the office. Thank you. We'll take your questions now. I'll again request you, पूछने के पहले कृपया अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन बोलें. हम सबका क्वेश्चन ले पाएंगे. कृपया जल्दी ना करें, एक एक करके पूछें, सबको सहूलियत होगी. I'll begin from first row then. हेलो सर, गुड इवनिंग. मोहित दुबे, न्यूज नेशन से बोल रहा हूँ. आपने तारीखों का ऐलान कर दिया, पूरी सूची आपने जारी कर दी. सवाल लगातार निष्पक्षता को लेकर उठता रहा है. रिजॉर्ट जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है या हम राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो एक निष्पक्षता को लेकर लगातार सवाल उठता है, विधायकों को लेकर उठता है. क्या उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म आप लोगों ने बनाया है ताकि विधायकों पर नजर रखी जा सके और निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाया जा सके? जैसे मैंने आपको अभी अपने संबोधन में बताया, इसमें 3-4 चीजें हैं. नंबर 1, ये पूर्णतः सीक्रेट बैलेट है. कोई भी इलेक्टर अगर बैलेट को दिखाएंगे तो वो बैलेट ऑटोमेटिकली उस दिन पर कैंसिल हो जाएगा. दूसरा, पेन की एक व्यवस्था मैंने आपको बताई. ये पुराने इंस्टेंसेस जैसे भी हो चुके हैं, तो वो पेन वही इस्तेमाल करेंगे जो कि कमीशन उनको प्रोवाइड करेगा. अगर कोई भी पेन दूसरा इस्तेमाल हुआ तो वो काउंटिंग के समय में कैंसिल हो जाएगा. थर्डली, हर स्टेट में कमीशन एक सीनियर ऑब्जर्वर को अपॉइंट करेगा, जस्ट टू कीप वॉच ऑन दिस. ये हमने एक लिस्ट बनाई है जो बहुत ही वरीय एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनको हम पोस्ट करेंगे हर स्टेट में, और हमारी ट्रेनिंग. तो 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव का हुआ ऐलान. तो आपको बता दें कि वोट देने के लिए इस बार जो कुछ कंडीशंस भी हैं, जिसमें आपको बता दें कि 1, 2, 3 लिखना होगा. तो पहली पसंद ना देने पर वोट फिलहाल रद्द भी हो सकता है, यानी कि पूरी सावधानी बरतनी होगी. तो 16वें राष्ट्रपति को लेकर के फिलहाल लोगों में कौतूहल है, लेकिन तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसमें 18 जुलाई और 15 जून की बात करें तो फिलहाल अधिसूचना जारी होगी और 29 जून को नामांकन की अंतिम तिथि. तो नए राष्ट्रपति को लेकर के, 16वें राष्ट्रपति को लेकर के अपने कि कौन होगा. तो 2017 में राष्ट्रपति चुनाव का मतदान 17 जुलाई को हुआ था और मतगणना 20 जुलाई को. और इससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि फिलहाल तो 15 जून को अधिसूचना जारी होगी. तो राष्ट्रपति चुनाव का हुआ ऐलान, 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव. तो फिलहाल 15 जून को अधिसूचना जारी होगी राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के. और कई इस बार जो हैं वो कंडीशंस भी बताई, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सारी चीज़ों का इसमें जिक्र भी हुआ. तो 16वें राष्ट्रपति को लेकर के पहली पसंद न देने पर वोट फिलहाल रद्द भी हो सकता है, यानी कि सावधानी बरतनी होगी. और वोट देने के लिए फिलहाल 1, 2, 3 जो होगा वो एक ऑप्शंस भी दिए गए हैं. 4809 वोटर्स होंगे और 15 जून को अधिसूचना जारी होगी. और इसी के साथ साथ जो तारीखें हैं, जो फिलहाल 29 जून को नामांकन की अंतिम तिथि और 18 जुलाई को होगा चुनाव. तो 18 जुलाई वो तिथि जब होगा चुनाव. तो राष्ट्रपति चुनाव का तारीखों का फिलहाल ऐलान हो गया. तो 21 जुलाई को फिलहाल अगर बात करें तो नए राष्ट्रपति के नाम का फिलहाल ऐलान होगा. और इसी के साथ साथ अपने दर्शकों को बता दें कि 4809 वोटर होंगे और 15 जून को अधिसूचना जारी होगी. तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के हम अपने दर्शकों को लगातार पल पल का फिलहाल अपडेट बता रहे हैं. राष्ट्रपति चुनाव 29 जून तक नामांकन होगा. और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता कुमार पुष्कल से. कुमार पुष्कल, 21 जुलाई को मतगणना होगी, 15 जून को अधिसूचना जारी होगी, 18 जुलाई को होगा चुनाव. तिथियों का ऐलान फिलहाल हो चुका है.
बिल्कुल अभी चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान कर दिया है। वोटिंग जो है वो 18 जुलाई को होगी और नतीजे 21 जुलाई को आएंगे और मतलब साफ है कि 21 जुलाई को देश का नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि 24 जुलाई को रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है और जो प्रक्रिया होगी तमाम चुनाव आयोग ने बता दी है कि किस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, कितने वोटर्स होंगे, साफ तौर पे ये भी कहा है जो प्रोसेस है वो पुराना प्रोसेस है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो मनोनीत सांसद और विधायक वोटिंग नहीं करेंगे, जो मौजूदा सांसद और विधायक हैं वही वोटिंग करेंगे। दिल्ली में वोटिंग के नतीजे घोषित किए जाएंगे, मतगणना दिल्ली में होगी, लेकिन जो विधायकों के लिए विधानसभा में वोटिंग होगी और सांसदों के लिए संसद भवन में होगी। लेकिन अगर कोई विधायक या सांसद कहीं दूसरी जगह वोटिंग करने के पक्ष में है तो उसे 10 दिन पहले चुनाव आयोग को बताना होगा कि वो वोट कहाँ करेगा। तो कहीं न कहीं चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। जी बिल्कुल कुमार पुष्कर, अगर बात करें तो इस बार भी एनडीए और यूपीए के बीच ही मुकाबला और एनडीए का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए सही न कहीं साफ तौर पे ये कहा जाए कि अब राजनीतिक पार्टियां अपने जो इक्वेशंस हैं, समीकरण है वो लगाने अब शुरू कर देंगे। बीजेपी भी एनडीए के साथ मिलकर अपनी जो गठबंधन सरकार है उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। उसके बाद अगर थर्ड फ्रंट की बात करें, तीसरे फ्रंट की बात करें तो वो भी अखिलेश यादव साफ तौर पे अभी कुछ दिन पहले दिल्ली आए थे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। तो कहीं न कहीं जो तीसरा फ्रंट है वो भी इसकी तैयारी जरूर करेगा, लेकिन कहीं न कहीं भारी बीजेपी समर्थित जो एनडीए है वो भारी पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बीजेपी अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट जरूर करेगी कि कौन होगा बीजेपी का कैंडिडेट, एनडीए का कैंडिडेट। ये बिल्कुल कुमार पुष्कर, लेकिन इस बार जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम सारी चीजों का जिक्र हुआ कि पहली पसंद न देने पर वोट रद्द हो सकता है, यानी कि सावधानी साफ तौर पर बरतनी है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग की उसको फॉलो करना होगा। जो वोट वैल्यू है सांसदों की कितनी होगी, विधायकों की वोट वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं है, वहां पर उस तरह की बात, तो कहीं ना कहीं कुछ वोट वैल्यू कम हुई है। तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से वोट वैल्यू पर डिपेंड होगा, चॉइस होगा कि 1, 2, 3 का चॉइस है सांसदों और विधायकों को। उसके साथ साथ एक पेन है, मैजिक पेन है, उससे उनको यूज करना होगा जब वो वोटिंग करने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया के तहत ये पूरा जो चुनाव प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। बिल्कुल, अगर पिछले राष्ट्रपति चुनाव की अगर बात करें तो लगभग 65.35% मत मिले थे और एनडीए की, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार भी कोशिश ये आंकड़ा छूने की होगी कुमार पुष्कर। बिल्कुल, कहीं न कहीं एनडीए भारी है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार है और कहीं न कहीं तमाम राज्यों में जिस तरह से बहुमत है एनडीए और बीजेपी का, तो कहीं न कहीं साफ तौर पे ये देखा जाए कि एनडीए का पलड़ा जरूर भारी नजर आ रहा है। लेकिन तीसरा फ्रंट जो थर्ड फ्रंट है, चाहे अखिलेश यादव की बात करें और तमाम जो केसीआर ने जिस तरह से नए फ्रंट बनाने की बात की है, तो जरूर अब बैठकों का दौर शुरू होगा। अखिलेश यादव कुछ दिन पहले दिल्ली आए थे, केसीआर से मुलाकात की थी, उसके अलावा कांग्रेस के कई नेता, लेकिन साफ तौर पे जो थर्ड फ्रंट है वो अब एंटी बीजेपी, एंटी कांग्रेस की तरफ रुख करेगा, क्योंकि उनके फ्रंट में कांग्रेस भी नहीं रहेंगे, बीजेपी भी नहीं रहेगा। तो तीसरा फ्रंट किस तरह से तैयारी करेगा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, ये भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कुमार पुष्कर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो फिलहाल 16वें राष्ट्रपति को लेकर के पहली पसंद न देने पर वोट रद्द हो सकता है। 15 जून को अधिसूचना जारी होगी, 29 जून को नामांकन करने की अंतिम तिथि और 18 जुलाई को होगा चुनाव। बड़ी बात इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के अलावा सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य वोट डालेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर कुमार पुष्कर बात करें, चुनाव आयोग को अब राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पूरी कहीं ना कहीं करनी होगी, क्योंकि अब लगातार जिस तरीके से तिथियों की घोषणा भी हो चुकी है, ऐलान हो चुका है।
तो 21 जुलाई को होगी मतगणना, 24 जुलाई को खत्म हो रहा है कार्यकाल। तो 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव, 15 जून को अधिसूचना जारी होगी और 29 जून को नामांकन की अंतिम तिथि। बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव का हुआ ऐलान और 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव। तो 24 जुलाई को खत्म हो रहा है कार्यकाल। 2017 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 17 जुलाई को हुआ था और मतदान 20 जुलाई को। और फिलहाल 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होगा, जिसके लिए फिलहाल अधिसूचना जारी कर दी गई है। और अब से थोड़ी देर पहले विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तिथियों की घोषणा भी की गई। अब ऐलान हो चुका है, जिसमें 4809 वोटर्स होंगे